Hello and welcome to Americans Learn. My name is Lauren and today I'm going to be looking at why India is great. I don't know if this is supposed to be a tourism thing or what, but I don't know very much about India. I know that I like a lot of the art. I like the food, but other than that, I don't know a lot about it. So I am looking forward to finding out why this country is, well, great. Hopefully from, you know, natives and people who live there who are going to be explaining to me why this is great. I want to see like an actual first-hand perspective. So if you want to see more stuff like this, make sure you let me know in the comments below. And hit the like and subscribe button. That way you'll always know when we post new stuff. Let's go. So this is great. This is part 2? Well, if there's part 1, you can send it to me because I didn't see that. हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 we'll destroy China's population 1.4 billion? और uneven social stratification या हमारा system, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा। Well, I have no idea what is going on. Are they going to tell me this in English at some point? Oh, okay. We're gonna start over. Whee! Year 2022 will destroy China's population 1.4 billion और uneven social stratification या हमारा system, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला। Really? They got to Mars? How did I not know about that? That they were the first country to get to Mars, rather. I did not know that. I know that people have gotten, like, we've sent things to Mars. I did not realize they were the first ones. Good job, India. देश भारत है और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। When is the that moon landing gonna happen? Because that sounds awesome. वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। And that's especially fun. I like that they win at cricket because cricket I feel like is very quintessentially British. So when the British were like when they stole India and kept it forever,
Now it's like, well, guess what? We're going to beat you at your own game. I like it. Get 'em. There is no country more diverse than India. रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है. हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी. ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है. भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ. So yeah, like the Vedic scripts and everything, right? That's from India. But yeah, no, India, I did know that there was a rich, like long lasting history there. Like they started everything, or at least a lot of stuff. The Indus River Valley, like that's massive. Like that was hugely important in the development of literally everything. Spirituality, astronomy, literature, science, engineering, construction, mathematics, agriculture, business, constitution of natural law और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है. इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है. गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज़ लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है. ऐसा देश जहाँ 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था. यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है. अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी. माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा. You will be. Oh, okay. He's like, sorry. For a second, I was like, wait, what? He's admitting that it's not perfect. You know, some things might go wrong. And again, like, I guess a lot of the, well, like, honestly, my favorite book that I read in, like, middle school, like, we had to read a whole lot of books for school, but, like, one of my favorites that I really loved was The Iron Ring, which was about India. And I just thought that was a really good, I liked that book a lot. I have no idea if it was, fair. They certainly didn't seem to try. It wasn't, from my recollection of this book, and again, this is a book I read in middle school, it was forever ago, it didn't seem like they was trying to look down on India or the culture. It was like, it was about this, like, prince who he ended up, like, cursed or something, and he became, like, a member of the lowest caste system, and he had to, like, learn a lesson or something and to rise back up to the top, but then he learned a lesson and became, like, a good person after that. Is the caste system still, like, a thing? I know that it was, like, a huge thing for a long time, and like, I remember reading stuff about it in, like, National Geographic and things like that, where it was just, like, kind of horrifying. Is that still like that? Or is that kind of fallen by the wayside a little bit? Just curious. Free. And it's like, I know it's not like, and nowhere's perfect when it comes to, like, rich people, or, like, well-off people, privileged people treating those less privileged badly. Like, that has happened. That's everywhere, constantly. I just know hearing about it, like, it was rigid in India, from what I remember. Like, it was an actual, like, rules, not just people being assholes. It was rules about it. But is that the case anymore? I don't know. Like, was it ever as bad as the West made it out to be? Like, tell me. Let me know. जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है. The use of cell phones is strictly prohibited. और ठीक उसके बगल में लिखा होता है, पेटीएम करो. As a matter of fact,
India invented posting shit on the walls long before Facebook. दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं और साथ ही भारत के Is that true? Because I had definitely heard that there are more tigers in captivity in America than there are anywhere else, which is highly distressing. लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सब I want to go to the anti-gravity hill. That's where I want to go. And buy the world's cheapest car. Is it good? Is it a good car though? सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. Good job, India. I'll give you so many props for that. That's awesome. That's awesome. I didn't know that. It's really cool. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं। Yeah, like their freaking food is unnecessarily good. It is. Ugh. Granted, okay, look, I would love to have, I don't know if I've ever had like proper Indian food, but I've had some really, really good Indian food. जैसे कि इंडियन कुजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज everyone agrees that the masala tea is the best tea in the entire world. I mean, yeah. Masala chai, that is what is up. It is really good. It is really good. आए है, और ये किस्सा नहीं कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। The business tycoon मुकेश धीरूभाई अंबानी, the richest individual in Asia and 18th wealthiest person in the world, Lakshmi Nivas Mittal, the king of steel, Ratan Naval Tata, owner of Jaguar, Land Rover and the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, yeah, I will say Bollywood is where it's at also. Bollywood's fantastic. If you guys have not seen Bollywood films, you absolutely need to. They're wonderful. They're so good. They're so much fun. The energy in those movies is unparalleled. सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वर्ल्ड डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। That's a satellite? Dang! Okay. स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक
सारा एक हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। वंदे मातरम। Wow. That was interesting. That was very interesting. I guess, and again, it is always fun to like watch other countries. Like this is, you know, because honestly, I've seen like America's great. Like I've seen those kinds of things too, and it's always funny to be like, okay, but I know more about America and like the ways that it has failed, um, in general. So when I see like the all the great things about America, I'm still kind of like, oh right, okay, that's cool. But also like, and so I see this about India, and I'm like, oh, that's awesome. Some of that stuff is absolutely fantastic. Like, and again, some of it I knew, some of it about like the in the ancient days, the amount of progress that was begun in India. Um, like the Indus valleys, like the Vedic scripts, and like there's some really really cool history there. And then there's things like the caste system that was, that's well known. And like then they're saying now that this video seems to indicate that that is no longer the case. Is it? Like if not, that's awesome. Good for like growing past that, I guess. Cuz again, it's very rare that you see a country able to decide that, you know what, we're not going to have a whole group called the Untouchables anymore. I mean, and like again, I said America has not had a good history with that itself. Like the way we treat homeless people in this country is really sick. Um and needs to be adjusted. So again, if India has in fact managed to like solve that, then I would love to know how, and like the steps that we could take here to make that a better place, like because that's awesome. And good for India, like actively, especially with America being like as horrible as it is about like with gender equality and everything right now. Like the idea that I was like, oh, okay, India's recognized the third gender, can we maybe recognize that it's not a binary, maybe? It's like that's cool. There were some really really interesting things in that video, and I want to see the pictures that satellite takes, like that little tiny baby satellite. I want to see the pictures that it takes, because that's awesome. But I enjoyed that video. If you want to see more stuff like this, do go ahead and let me know in the comments below, and I will react to them. And make sure you hit like on this video, subscribe to the channel if you haven't already. You'll always know when we put out new content. We've got music, we've got history, we've got science, we've got all sorts of things here. So let us know what you'd like us to react to next.